नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनसंग हीरोज लेजेंड्स इन स्पॉटलाइट। अंडर दिस प्लेटफॉर्म वी जनरली टॉक अबाउट the physical health of a human being, and of the physical health the most important part is the gut health. But unfortunately हमें we are not told as to how important is gut and how our gut and mind are connected, and how by improving your gut health you can actually improve overall physical health. So this podcast, this platform is basically used to bring out the importance of gut health to my audience, and also how what does the impact of a lifestyle of a person has on his overall health. So we are going to talk all this today and more deeply dive into it and understand what is gut health, how our mind and gut are connected, and how change in lifestyle actually can improve your gut health, and what are the different types of bacteria, so on and so forth. And this, we are going to go deep into this today because the guest who is there with me today is very, very special. He is a mind coach for entrepreneurs and corporate at Happiness Center since 2019. He is also an NLP coach and has transformed many lives and freed them of many chronic diseases and brought smiles on their faces. And because everybody wants to be happy, and bringing a smile onto faces much, much bigger than anything else. As far as his academic background is concerned, he has studied MA in Public Administration at Andhra University in Visakhapatnam, and also he is a Law of Attraction certified coach. So he is a bundle of everything. And without further delay, let me call my guest, and he is none other than Mr. Damodar Hota. So welcome, Mr. Damodar Hota. Welcome to my podcast, and thank you so Thank, much for accepting my invitation and being here. It's pleasure to for you to be here. thank you, sir. Thank you very much. Great. So, Mr. Hota, today episode is going to be very, very useful, especially for those audience who actually want to know as to what is all about gut health, gut and mind connection, so on and so forth. So, before we start go into the podcast, can you briefly tell about your background in the sense childhood किस तरह से रहा, कितने पे मतलब parents कितने how are your school studies, because that forms the foundation of everybody. Okay. Thank you very much. I'm grateful to you, and I'm grateful to all the audience who are listening this podcast. Thank you. Thank you very much. Actually, I was born in a small village of Odisha in 1979. So my schooling was done entirely in government schools, in Odia medium schools only, particularly. At that time, there was no communication. As you know rightly, that no internet, no good communication. And I was born and brought up in that village. My father was a teacher, and we are seven brothers and sisters. Mhm. So the thing is that at that time, the income was not huge, but my parents always add more value in your life. They could not give more money to us, but rather they always focus on giving more value in us, value of humanity, value of what to do or not to do, Mhm. value of how to bring transformation life of other people, how to help them. These were the values which was inculcated in us since childhood. So that in that environment, I was born and I was brought up. I did my BSc, then I did MA in Public Administration from Andhra University. I appeared many civil service examination, bank examination, many exams I appeared. But God has a different purpose. Actually, I did not fail. I learned a lot from those experiences. It was learning. People say I failed, but instead I say it is an attempt to learn something new. I learned True. many things. Mm. And the most tyranny happened with me is that my father died in 1996 when I appeared plus two exam. My exam result were not declared. In that between, my father died soon after the marriage of my second sister. So it was a turning point for me. We faced the deadest part of life. We face such, we have seen such depressed, oppressed life. You can't imagine because the importance of money I understood at that moment. Even 10 rupees matters a lot. Nowadays, people don't understand 1 rupee, but 1 rupee even matters a lot for many human beings. True. So, from that humble background to this challenges of life that molded me, that shaped my life,
and that gave me a purpose of life. What is to be done? So I thought many students, many people like me, they are suffering. Mm. So can I do something for them? Mm. Can I do something for them? In between, I joined an education department under government of Odisha. I was doing my job, but all of a sudden I get in touch with many gurus, many digital coaches who helped me to get this knowledge of who am I. The Mm. thing is that we always believe, suppose you say Srinivas sir. When someone asks you, please identify, you say, I'm Srinivas. I say, I'm Damodar. But this is the identity which is given by society to us. Yes. The parent, they gave us the name. But I'm not Damodar. You are not Srinivas. Look, suppose we go to a doctor. I say, this is my hand. We say, this is my hand. We don't say, this True. is me. Suppose you have issues in eyes. You said, my eye has issues. My chest has some issues. Then who are you? Mm. This body is not yours. You Absolutely. identify. Mm. People and society give us identity according to this body. Mm. They remember our body color, they remember our body shape, size. People say, he's Damodar, but I'm not Damodar. I'm Damodar because society, for identification, they have given me this name. True. But all of a sudden, I realized I'm not Damodar. This name is given to me by society. My surname, Hota, is given by my family legacy, Mm. by my ancestors. Mm. But who this Damodar Hota is really? This body is not Damodar Hota. That body is not Srinivas. True. So this is the crux where people, some people you see in the world like Ambanis, from very humble background, they have a big lip we can't imagine of. But Mm. many people they stay at the best level only because Yeah. of identity. This identity is the thing. What I have realized in my case, I was doing a job where I was very happy, very comfortable. But the day I realized, no, my identity is different. I need to do something for the other for transformation of other people. That day, I came in touch with many gurus, many people, many transformations. So this is what I realized: your identity is the crux that makes who you are. True. I think very well said, Ms. Damodar. There are two or three things which I'll just elaborate in whatever you spoke. So, about your childhood, that the values what your parents have given. Yes. Now that's very, very important. Even I realized in my case, I'm also very from a very humble, low middle class background. But the values what my parents have given me actually are there with me throughout, even today. And that's what actually makes me stand out of the crowd. And that's exactly what happened to you because I think this parents should understand because when a child is from 4 to 14 years, that is the time when a personality of a child is developed. Yeah. And उस time पे most of the time he is there with the parents. He's actually observing the parents, Yeah. right? What they are talking, the way they are behaving, the words they are using, everything is being recorded in the subconscious mind. And mostly it is not about what you give instructions. हम क्या बोलते हैं वो important नहीं है. हम क्या करते हैं that That's very the child important. observes the more Yes, important. yes. So, जैसे you also know कि our subconscious mind keeps on recording everything in the five Yeah. senses. And I think this is one thing which most of the parents doesn't understand. हम बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चा कर लेते हैं, फैमिली करते हैं, बस खत्म हो गया. और जब बच्चा That's 20 साल के बाद जब पेरेंट्स के ऊपर रिवर्स बोलने लगता है तो पेरेंट्स बोलते हैं देखो देखो कैसे जवाब दे रहा है. yeah. But parents are But responsible for that. yeah, because it is their brought up. It is their Yeah. the boy or the girl. He has learned it from them only. उनसे सीखा है उसने Yes, that's mostly. true. So this is one. Second very important thing is like you said ki you are not Damodar, I am not Srinivas, right? And now when we come to the energy part of it, everybody is energy. Yes. Everything is energy in this world. Yes. Like when we are taught in the schools, what is a human, what is a particle? Particle is made up of molecule, molecule is made of atoms, subatoms, and then the nucleus. And nucleus has Mrs. electron. I would like to tell you here. I would like to add one more thing as you've told about energy. Yes. Before 5,000 years, when the Mahabharata war was going on, at Mhm. that time, Arjuna said, I will not kill all my relatives True. because some of my brothers, some of my sisters, in laws Mm. like that, so I will not Yes. kill them. At that time, Sri Krishna said one thing that you cannot touch the Atma, you can kill the body. Body. If you kill Yes. someone, it is about the body, not the Atman. So, what Atma. is that Atman? In spirituality, Atma means people believe in the different way. Yeah. To that same thing, Albert Einstein, the greatest scientist of all time, he Mm. has invented a theory called law of conservation of theory.
He said in that theory one thing, that energy cannot be created, energy Not cannot be destroyed. destroyed. It can take from one form to another form. वही Absolutely. बात जो कृष्णा जी ने बोला था कि इट वाज आत्मा को हम, आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा मरता नहीं, आत्मा नेवर टेक बर्थ, नेवर डाइज, इट टेक टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। एग्जैक्टली टू सेम वर्ड्स, जस्ट ही यूज आत्मा, ही यूज एनर्जी। Hmm. So that is the energy what we discussed earlier. You are not Srinivas, I'm not Damodar. We are basically this part of energy. Energy. Absolutely. So I think 5,000 years, what our Yes. mythological stories have told, Yes. Einstein has. Same thing. It was scientifically proven by Albert Einstein. Huh. But yes, unfortunately, most of us don't know. The moment we talk about spirituality, people think it is Yeah. a different world or something like that. कि संन्यास ले लिया है, something like People are that. taking, taking this clothes, taking tika, Yeah, all the things. This is correct, what correct. believed to be spirituality. So these are two important things. And the third important thing you talk about identity. I Yeah. think identity is one thing which every individual should know. But I feel कि more than 90% of the people they live their lives, but उनको पता ही नहीं कि उनकी identity क्या है. Yes. उनका मतलब Basically, वो they're living in the borrowed identity. Even correct, what I say to you, you believe that is true. true, true. This is what the borrowed identity and basically. and and wherever yeah, the subconscious mind takes them, they go. They are driven by the subconscious mind. मतलब जैसे चल रहा है चलने दो, जो आएगा हम देखे जाएंगे. I think identity is very very important, and with identity also you come to know what is your passion. That's Like you that's true. told ki I want to help people because you have gone through that difficulties and now you Yeah. want to help people. So I think failures only brings a passion out of the person. Yeah, Yes. he helps to build up an identity of a person. Is it true? Right. Right. Of course. Because most of the time, what happens, we suppose, how can be an expert? Think of Hmm. a teacher. If a teacher is teaching maths for last 25 years, that's why कल ना गांव में जाओगे ना, एक चीज बोलते हैं, टीचर नहीं बोलते, मास्टर जी बोलते हैं। Master ji बोल. मास्टर मतलब क्या है? मास्टर मीन्स he has all the skills. Hmm. Hmm. A master means he has all the skills of any avenue, any venture you can take. Yeah. So master, he became a master when someone gone through that experiences. Hmm. Hmm. So Hmm. that is what, when you face such challenges and you know how to come out of that, Yeah. there is a formula, there is a science. If I can give to that formula to others, I hope that will work, Hmm. because Hmm. it has worked with me. True, true. Great. I think starting when we have gone deep into it, spirituality and energy and all those things. So let's come back to the crux of my podcast, that is mental health. So, what is the biggest, as per you, what is the biggest misconception people have about mental health in today's world? Mental health, look, suppose I think now I'm sitting before you. Hmm. If I record my temperature, if it is 98 or 99, it's okay. Hmm. When it is 100, 304, then only I think I'm sick. I need the help of a doctor. Exactly. People think if there is nothing wrong is going on with me, with my mind, it's fine. I'm Hmm. fine. Hmm. But the issue is he's not fine. Why Hmm. he's not fine? Let me give an example. Suppose you're driving now. Suppose you are driving. At that moment, if someone overtakes you at a Hmm. high speed, even at that moment, for 1 minute, what comes? Why is it? Why is it doing like Yeah. this? There is Anger. no rules. There is no rules in this country. People are not obeying the rules. Yeah. Now, these small things, this create anxiety. This create, disasters in your brain. They are Hmm. creating such kind of, mental, neurological pathways. Yeah. And this added up, and this become the poison for you. Exactly. These are the small things, the stress, those kind of anxiety. Suppose you see a person and that person has done something wrong for you in the past. Gone, that is maybe 10 years back. But Hmm. even if now, if you see that person, the same kind of feeling is coming to you, this triggering within you. So at that moment, you have to understand your mind is not good. But True. people don't count this. People Hmm. don't count this because we don't have that kind of education about our brain. Absolutely. Hmm. We don't have that kind of education, so people believe I'm fine. But you see, after around 60 years, after 70 years, people go dementia, Alzheimer, all kind of disease comes, because this disease can be traceable when at the last stage. Hmm. True. Hmm. At the initial stage uh, uh, we cannot find these diseases. Yeah. It can be diagnosed at the end stage. So by the time you are unable to, doctors cannot
make any help for the patient. Yeah. I think, yes, very important thing is this is actually neurological degeneration of the things, right? So, what I was telling is like people don't understand what is all about mental health. There is a social taboo in the sense, अगर mental health बोल दिया मतलब पागल है. हाँ, पागल पागल. वो Yeah, that is स्पेशली there. इंडियन सोसाइटी में वो है. एंड Yes. ऑल्सो लाइक यू टोल्ड इनिशियली वी डोंट कम टू नो फॉर इयर्स टुगेदर हम कचरा को Yes. जमा कर रहे हैं अपने माइंड में, बस बस बस. लेकिन हमें पता नहीं रहता है. और जो आपने जो बोला था ना कि आपका एल्जाइमर्स या फिर वो सब जो है Dementia, वो yeah. 20-30 At the ईयर्स end के stage. बाद आता है. Yes. Yes. बट But the उसका. seed जो होता है ना, उसका seed आज से शुरू हो रहा है. यस. Since childhood, it is हाँ. going on. If someone said any wrong thing to you, कोई जोर से चिल्ला लिया आपके ऊपर, हाँ. टीचर ने कभी आपको बोल दिया गधा बोल दिया, it is still fresh in the mind. करेक्ट. इमोशंस को लेके हम घूम रहे हैं और Yes. पूरा इमोशंस हर दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. राइट. that सो is. आई थिंक दिस पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ डजंट मीन कि आप पागल हो. मेंटल No. हेल्थ इज when you're not normal, when a small incident actually triggers you or brings anger into you, and when this happens over a period of time for years together, ये Hmm. जाके आपको आगे चल के आपकी फिजिकल डिजीज में कन्वर्ट होगा. It's ये more भी. about your alignment. It's more about alignment. यस. It's more about alignment about your. देखो, all करेक्ट. kind of thought comes from the brain. हम्म. जितना भी सोच हो रहा ट्रू. था, all kind of thought comes from the brain. So it's हम्म. all about thought and emotions in body. This energy इसको बोलते हैं. अगर ये तीनों का alignment होगा ना, then you are at the absolute life and you can enjoy peace. जिसको बोलते हैं लोग peace. You can be at हम्म. peace. But if they are not in balance, या. suppose आपको मुझे देख के गुस्सा आ रहा है, हम्म. you don't want to tell me because I may be your boss. But if हम्म. you can control, then that is imbalance. It is not alignment. So when there is alignment between this, your thought, brain, your emotions, and your body, the energy part, then when alignment happens, that is the condition when your brain feels okay. It's fine. हम्म. But most of the time, people are not alignment. You see two brothers living in the same family with very close relationship. A time comes when they're separated. They don't हम्म. even talk to each other. What हम्म. happened? There is no alignment. There is no या. alignment between the thoughts and beliefs, all the things. So forget about others. It's not, we are not aligned within ourselves. ओह ओह ग्रेट. We हाँ. are not aligned within ourselves. अगर हम अपने अंदर ही alignment नहीं है ना, हम्म. then you have everything. दुनिया के आपके पास सब कुछ हो सकता है, but still there is a vacuum. हाँ. इनफैक्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओनली. सो पीपल Okay. आर वेरी सक्सेसफुल, दे हैव गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, बट लेकिन दे स्टिल फील एम्प्टी, आर स्ट्रेस्ड. एंड बाहर से हम जब देखते हैं तो लगता है कि लाइफ परफेक्ट है, बट एक्चुअली Yes. नहीं है. इज दिस ट्रू? Yeah, of course. देखो, हमें बच्चों जब हम छोटे बच्चे तब से हम क्या बोला गया, अच्छा पढ़ाई कर, अच्छा नौकरी कर, लाइफ बन जाएगी. इट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट्स. हम्म. हमें बताया जाता है कि अरे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, सुंदर लड़की से शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बढ़िया लाइफ जीना है. हम्म. These are all, instrumental. This is like, there is a saying, proverb saying that you can buy a bed, not sleep. करेक्ट. हाँ हाँ, यू कैनॉट से You एब्सोल्युटली. can buy a home, but not peace. So what is the context behind that? The context behind that, you can buy a bed, maybe $1 billion. But if you are not aligned with the body, mind, its energy, you can't या. sleep. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. So this is what is missing. This kind of education is missing. हम्म. Nowadays, people are more oriented about objective world. They're most oriented about achievements. हम्म. मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है. And there is no end to achievements. हम्म. If someone is getting salary of 1 crore, he thinks of 2 crore. 2 crore, then he thinks of 5 crore. So करेक्ट. the thing is that you should be aligned with your thought, your mind, your emotion, and your energy. जब ट्रू. ये तीनों alignment हो जाएगा ना, then doesn't matter where you are, doesn't matter what is your income. I don't say कि you should not improve, आपको improvement नहीं करना है, एब्सोल्युटली. ऐसा हाँ. नहीं है. But when you are peace with yourself at present, then only you can grow. ट्रू ट्रू. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मींस एमिंग हाई, लाइक 1 करोड़ है तो दो Yeah, करोड़ करना है. बट yes, लेकिन दो yes, करोड़ करने के बाद उस 2 करोड़ को करोगे क्या? इज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द yes, सोसाइटी, हेल्पिंग पीपल, yes. मेकिंग योर स्टैंड? सो वो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. अगर आपका सक्सेस के साथ वैल्यू ऐड नहीं है, यस. then that is an issue. What I've learned in my सक्सेस, childhood. You think of वैल्यू. Vijay Mallya. You think of इन. Vijay Mallya. He had, enough money, हम्म. but he's no more now because value was missing. हम्म.
Success was there, but value is missing. So most people who do suicide, you may see newspaper, TV all the days. Big people. It's not about the gaon ka log. It's about the Hmm. high class profile people, corporate people. They're also doing suicide because they've got success, but they don't know how to align success with their emotions. Hmm. Someone becomes IS officer, IPS officer. Recently, I think one IPS officer died due to some issues. Yeah, We're not correct. there. Yeah, We're there's not no. here to discuss. But thing is that IPS means he had the courage to work under pressure. Hmm. But a person dies means he is not aligned with his success, with his emotions, how to handle emotions. Correct. So this is what most people they don't understand. Hmm. People think achievements, but they don't understand alignment. So Hmm. when you align your emotions, your energy, your thoughts at one place, at one go, then you can enjoy your life. If that is missing, क्या होता है? आपके पास सब कुछ होता है, जो मूवी का एक डायलॉग है ना, तेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है. Hmm. मेरे पास क्या? Exactly. Even if you are sitting in the AC car, but here it is burning, Yeah. inside is burning. Hmm. I am sitting in the best car in the world with still AC. But if I don't align with you, once I see your face, it start burning. Burning. Even the So time. yes, inside chill car, the best car of the world, Yeah. but inside is burning. So it is about inside burning, not outside burning. I So think, most but people are burning inside. yeah. And I think, yeah, this is a very, very valid point. Inside burning means even if you're Yes. sitting in an AC car, your stomach is Doesn't burning, matter. your chest is burning. Burning of no use. No use. People don't realize that. Yes, that is called alignment. Basically, that is called alignment, which people don't have this kind of education. Because we think, चलो यार थोड़ा मेकअप हो जाए, थोड़ा Uh, बेटर ड्रेस पहन ले, थोड़ा बेटर गाड़ी खरीद ले, कार खरीद, इट्स ओके, इट्स नीडेड, आई डोंट से नॉट नीडेड. yeah. बट फंडामेंटल क्या है इस सबका पीछे का कारण क्या? रीजन, व्हाट द रीजन इज वी वांट टू बी पीसफुल. बट इफ आर नॉट एट पीस, वी आर Uh, नॉट अलाइन्ड विद आवरसेल्फ, देन आवर so, एक इमोशन कहता है कुछ करो, थॉट कहता है और कुछ करो. सो दैट इज मिसिंग, दैट काइंड ऑफ So, अलाइनमेंट इज Mr. मिसिंग. Damodar, when we are talking about this, मेरे को एक और आइडिया आ रहा है कि should we not teach this in our schools? Like parents also doesn't know. Leave alone बच्चे, पेरेंट्स को ही नहीं यस. पता, आज के पेरेंट्स को ही नहीं पता है. सो उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो है 50 के बाद ही समझना चाहिए. तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वी शुड स्टार्ट टीचिंग दिस फ्रॉम 7th और 8th स्टूडेंट एंड मेक इट एज एन हैबिट फॉर द स्टूडेंट्स. That And is, then only that the is, in the future the society will be good. it's absolutely correct. Absolutely correct. That's why I have designed workshop for students and basically with family members. तो मेरा ये Yes. जो हैप्पीनेस सेंटर है ना, उसकी टैगलाइन है स्माइलिंग फेसेस हैप्पी फैमिलीज. True, true, You absolutely. alone cannot become happy. Suppose you become richest person of the world, but Hmm. if others in your family are not happy with you, it's of no use. With whom you will celebrate? किसके साथ Yes. सेलिब्रेट करोगे? दोस्त आज या कल चले जाएंगे, रात को घर चले जाएंगे. Hmm. It's a family. The family members, they're the very important part of our life, which we Ah, don't understand. So this is what should be taught from class one, I say, not class yes. seven. It should be taught from Okay. class one. That is most important for everyone. Okay. I think when you're talking about family, one more thing which has just struck me. So relationships actually play a very, very important role. Previously, also you Yes. spoke about two brothers getting separated. Yes. So Yes. every successful person, when you study their biography, you will see that one top thing what they have, they maintain beautiful relationships. Beautiful. So I think Yes. one point audience should take from this particular podcast is you have to build relationship with everybody. First, of course, is 100%. the family, and then Yes. also social, also, and at the workplace also. So Actually, your points on that? yesterday I was watching a reel in that Shahrukh Khan Saab said one thing, that is, मैं जितना काम काम करता हूँ बाहर करता हूँ. When I'm at home, I put my phone in off. All Hmm. calls will be taken by manager. I spend much time with my babies. Hmm. He said, I teach maths to my son. I know he's going to fail in math because I'm teaching maths. No, Still, I no. teach him. No. So he says it's a way to express, which is way to get some time, close time with your babies. Yes, yes. Hmm. That is what he says. So I think this is very important for every parent because nowadays both the Are father mother both working. are working, so Hmm. they get hardly time, productive time, quality time to Hmm. spend with children. That So, is most essential. yeah, so then it actually was the next question. So, what is one daily habit which every parent should follow? I think this can be one. Spend some time with your kids. 100%, 100 quality time. I don't say time, Qual- quality time. Quality time. Because
Look, think of a boy. I have a son, 15, 16 years old. So I'm doing some psychological analysis of him. His friends, basically, they don't want to stay at home. They prefer to roam around. They prefer to stay at others' friends' home. If not, they love to go to cinema hall, sit in the dark room for 2 hours. Why? Because they don't find this alignment in family. They have a strong belief. My father don't understand me. My mother's always say wrong words about me. This is what they have the strong belief. Mummy, Papa, मेरे बात सुनते नहीं है. They're not aligned with me. So, When this are kind of parents belief comes, responsible for this? to some extent, to some extent, I To don't say large extent. 100%, because look, his parents' duty is to rectify babies, 100%, but it should not be a curse to them. It should not be a curse to It them. should never be. Let's understand each other. Let's understand And each other also, and children find. should understand that whatever parents do, it's for their benefit. Parents who don't Yes. have any selfish idea, selfish Yes, this please, thing, but but it is it's their for their age. benefit. At that age, basically Ah, adolescence, that age, they are yeah. not able to understand that. There's so many biological changes which are taking place. Yes, They yes, feel that yes, they know everything. So all these things are yes, there, of course. yeah. Okay, now when we're let's come to spirituality. So how important are things like meditation and mindfulness techniques in one's life? Because जब भी हम मैं भी बचपन में जब था तो मेडिटेशन बोलने से ऐसा लगता है कंसंट्रेट करना है होता नहीं है. So what do you Right. feel कि how important meditation is in one's life, especially childhood में? Look, Mr. Srinivas, when we come to this earth, we have two things. One is this body, and there is mind. Hmm. This body has different parts. Hmm. Hair. Sorry, I don't have hair, but That's okay. That's hair is there. It has different tissue. If you cut hair, there is no pain. If you cut our nails, there is no pain. But yeah. you take a small bite over here, there is some pain. Hmm. So the different tissues are designed in such a way, they're programmed in such a way. We don't know that. Who programmed this? We Yeah. call Okay. God, some Hmm. energy. So Universe. how they work? To us, there is a software, that the brain. The Absolutely. brain, the software, and the software designed such a way that it works up to 100, 120 years. Hmm. And that software is fitted in such a way, the heart, it never stops. Hmm. Our skin is so sensitive. हम बोलते हैं phone का sensitivity, the skin is very sensitive. More sensitive. Absolutely. So the brain is designed, it has software that runs this body. Hmm. So when this software is corrupted, what will happen? True. And how this works, I think, as you know, that neuroplasticity, a new term has coined up nowadays. It means people say, "Oh, gadha hai, he's smart," like this. Many people have such kind of things. No, he's not gadha he's gadha in maths. Maybe he cannot do maths because brain has different kind of our faculties, Hmm. almost 8 parts. Someone is better in writing, linguistic. Someone is better in logical calculations. True. True. So to a Absolutely. logical person, we can't say gadha in literature, or Hmm. literature person, we can't say gadha in logical. So it is different. People has different uniqueness in them. Hmm. When this brain is at peace, Hmm. it gives us better output. Our productivity increases. Whatever you do, वहां से हमारा अच्छा रिजल्ट आता है. अगर ब्रेन ही वो स्टेबल नहीं है, जैसे कि एक पानी पानी कहीं पे है समंदर में, if it is smooth, the boat can sail in a better way, Okay. easy way. But if there is heavy waves, tsunami, in that condition, the sinking of boat is there. Chances of sinking of the boat is there. Exactly, this brain is like a water level. Hmm. If you bring many unnecessary thoughts, many unnecessary data, Hmm. past memories, past traumas, Hmm. something happened before 10 years, before 20 years, if we again and again bring it to us, what happens? The tsunami kind of things comes to the brain. True. As a result, we are not able to perform. Suppose कोई बच्चा है घर में ज्यादा पढ़ाई किया, but at the exam hall fail everything. बोलता है मुझे समझ में नहीं आया. What to do? He Hmm. forget everything because at that time his brain was not aligned with himself, with his emotions. So So what you when you do meditation, okay. this really helps. This really helps. Like brain has different waveforms: alpha wave, theta wave, beta wave. These are the forms of gamma wave. These are the Frequencies, waves. basically frequencies. Yes. So when we are at peace, now what happens? Our productivity increases. Whatever we have read, we can Hmm. remember it better. जो भी काम करें ना बहुत अच्छे से उसका Hmm. response आएगा हमारे साथ. So ultimately, doing this yoga, pranayam, it's all fine. This is benefited. Okay. So basically, you want we mean to say is when we are doing meditation, our energy levels increases, and when Yes. energy levels increases, then it also brings in more clarity in thoughts.
ऑफ कोर्स व्हाट एवर हाँ, डू, जो भी हम करेंगे ना, तो हमारा क्या, देखिए, आप कैसे, आपको पता है कि आप श्रीनिवास हो, बिकॉज देयर इज ए मेमोरी। या आपका घर याद है, आपका ऑफिस याद है। हम्म एवरी टाइम यू डोंट आस्क वेयर इज द ऑफिस, सो देयर इज ए मेमोरी, द मेमोरी एंड नाउ द आउटपुट। सो व्हेन इट इज एट पीस, मेमोरी में जो भी है ना पूरा अच्छे से ट्रांसफर होगा, अगर नहीं तो देयर इज डाइल्यूशन, वो ट्रांसफर नहीं होगा। जिसे हम कहते हैं, अरे मुझे पता था बट मैंने नहीं किया। नहीं किया, कभी कभी बोलते हैं हम, अरे यार मुझे पता था बट एट दैट टाइम नहीं करता मैंने है। नहीं बोल पाया। So it is very common with us because at that time you might be in stress, you might be in anxiety, something कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो मेमोरी रिट्रीव नहीं हुआ, डाटा रिट्रीव नहीं हाँ, हुआ मतलब बस। माइंड इधर उधर भाग रहा है Yes, उस जगह में कंसंट्रेट नहीं yes, हो रहा। ग्रेट, yes. ग्रेट। So we have talked about a lot of emotions what human beings carry, and Yeah. it brings in that garbage in our mind, so thought process clarity नहीं होता। So मेरा next question ये आपसे है। So हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। तो can we go for medication for any emotional issues, or any to heal the emotions or traumas or past traumas? कोई एलोपैथी मेडिसिन है क्या? देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जो डिजीज बोलते हैं ना लोग, बेसिकली इट्स नॉट डिजीज, डिस इज अ बॉडी। बॉडी करेक्ट। क्या डिस इज है। हाँ। ओके। सो बॉडी मीन्स, हम सोचते हैं ये जो फिजिकल बॉडी है ना हमारा, एक्चुअली टू टाइप्स बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी और एक है एनर्जी बॉडी, जिसको हम्म सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर कहते हैं लोग। हम्म, एक्चुअली ये बॉडी है। देखिए एक जिंदा आदमी है, एक मरा हुआ आदमी है, देर इज ए हाँ। बॉडी एंड डेड बॉडी। व्हाट्स द डिफरेंस, दोनों में तो सेम ही है। आंखें, हाथ है, कान है, सब कुछ है। व्हाट इज मिसिंग, मिसिंग क्या है? लाइफ। वन थिंग इज मिसिंग, जो यहाँ धक धक नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, हार्ट बीट आ रहा है वन नहीं पा रहा है, इसलिए डॉक्टर देख चेक करता है, बोलता है आई एम सॉरी। हम्म अगर पता होता डॉक्टर लोगों को कि ये क्या धक धक कर रहा था, हार्ट बीट होता, उसको इंजेक्ट कर लेते ना वो लोग। हम्म आज तक साइंस ने ये डिस्कवर नहीं किया व्हाट इज दैट, हम्म वो क्या चीज था जो हम्म, नहीं है तो डेड हो गया। सो दैट इज मिसिंग बेसिकली, ओके। एंड दैट इज कॉल्ड, बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था, श्री कृष्ण ने जो कहा था आत्मा, जिसको एनर्जी कहते हैं, वही पार्ट है, वही हम्म पार्ट है बेसिकली। हम्म तो बॉडी डिजीज कब होता है, पहले हम उसको फंडामेंट में जाएंगे। फाउंडेशन क्या है? जब हम पैदा होते हैं ना तो बॉडी में दो, एक बॉडी है एक सॉफ्टवेयर है, तो ठीक काम कर रहा है। अप टू एज 3 एज 4 आप देखिए बहुत लोगों का ज्यादा डिजीज नहीं आता है। हम्म जब आप बड़े होते जाते हैं ना, तब क्या होता है, एज ए टोल्ड, किसी ने आपको गाली दिया यहाँ पर भरा, कोई कुछ बोल दिया यहाँ पर भरा, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका जो एनर्जी लेवल है, 7 चक्रास है हमारी बॉडी में, ये आपको दिखेगा नहीं। अगर कोई सर्जरी कर भी लेगा तो ये 7 चक्र आपको दिखेगा टाइम नहीं कहीं पे। लगेगा। बट इन स्पेशल कैमरास नाउ यूएस में लोग यूज कर रहे हैं, दे कैन सी 7 चक्रास ओवर हियर, मूलाधार चक्र टू सहस्त्रांश चक्र पूरा। वहां पर क्या होता है ना, इम्बैलेंस होता है एनर्जी। जहां पर इम्बैलेंस होगा, जैसे कि आपका देखिए, सपोज ये पाइप है, सपोज एक पाइप है, पाइप में पानी जा रहा है, ये पाइप फोल्ड इट ओवर हियर, नाउ वाटर कैन नॉट फ्लो। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में जितना आपका एनर्जी पॉइंट से, एनर्जी चक्र से, जब वहां पे कोई ब्लॉकेज आ जाता है, दैट पार्ट इज नॉट गेटिंग राइट एनर्जी। हम्म हमें जितना फूड चाहिए उतना फूड नहीं मिलेगा, तो कैलोरी नहीं मिलेगा आपका। हम्म एग्जैक्टली उसी पार्ट में आपका कुछ इशू आता है, हम्म दैट इज कॉल्ड डिजीज, मॉडर्न वर्ल्ड में उसको डिजीज बोलते हैं। ट्रू। हाँ, कुछ क्या होता है ना, जो सीवियरली डैमेज हो गया, जैसे कि सपोज आप कहीं जा रहे हैं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, खरोच आ गया, यू कैन पुट बैंडेड। बट अगर सीवियर है, देन बैंडेड कैनॉट वर्क, यू हैव टू गो फॉर स्टिचिंग। या एग्जैक्टली, अगर आप कोई सोच को ज्यादा ज्यादा दिन से सोच रहे हैं, एंड इट हैज रिफ्लेक्ट ऑन योर मसल मेमोरी, देन एट दैट मोमेंट योगा कैनॉट हेल्प। Only yoga or such therapy cannot help immediately. It will help, but it will take its time. So immediately you go for medication, जाके आ जाओ। But ultimately yoga and mind programming, जो NLP कहते हैं, basically, which I love the most, that NLP part. By using that, last time, let me give you an example, कि एक इंसान थे यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ऑफिसर है, जिनको बहुत सारा फियर था पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। स्टेज में जाते थे तो थरते थे पूरा ऐसे, स्टेज में जाए तो बीपी हाई होता था, पसीना आ जाता था। That person I use NLP and he's now fine. हम्म For mostly emotional activities, we can get immediate help. But जो physical form में आ गया disease, for that you should go for medication first. After that we can do such techniques जिसमें उनको बहुत फायदा हो सकता है. They can get benefit out of that. But I think most of the diseases are psychosomatic, more than 90%. ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। आपका देखिए जो भी डिजीज होता है ना, सपोज कोई पेन होता है वहां पर, पेन हाँ। क्यों हुआ? एर्लियर यहाँ पर एनर्जी फ्लो था, आज एनर्जी फ्लो नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज पेन। आपका जो मोटापा, ओबेसिटी, आज के डेट में बीपी, डायबिटीज,
ये सब का अल्टीमेट रीजन ना यहाँ से शुरू होता है, माइंड से शुरू होता है। माइंड से शुरू होता है। एक हम्म दिन में नहीं दिखेगा आपको, जैसे मैंने बोल दिया, धीरे धीरे दिखने लगता है, एंड कुछ दिन के बाद नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। हम्म तो डिजीज क्या कहता है, डिजीज कहता है इट्स ए सिग्नल कि अरे यार आई एम नॉट इट्स ए गुड, सिग्नल। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अच्छा कर। हम्म बट यू टेक मेडिसिन। या एक एक बात सोचिए, जो केमिकल आप मेडिसिन लेते हैं वो क्या है बेसिकली? इट्स केमिकल है। केमिकल, केमिकल। अच्छा, वो केमिकल आज ले रहे तो उससे पहले जब आप डिजीज नहीं थे तब तो आपके अंदर वो केमिकल था, आपका माइंड वो बना रहा था, इसलिए आपको लेना नहीं पड़ा। हर दिन आपका माइंड 1,14,000 हार्मोन्स बनाता है, केमिकल, वर्ल्ड सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री यहीं पे है। ट्रू। 1,14,000 बनाता है। अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया, हम्म जहां से आपका पैरास्टामोल आना था, सेरोटोनिन आना था, वहां पे ब्लॉक कर दिया, सेरोटोनिन नहीं आएगा, एंडोर्फिन्स नहीं आएगा, डोपामाइन नहीं आएगा। सो देन डॉक्टर क्या करते हैं, दे इंजेक्ट दैट केमिकल इन योर हम्म बॉडी, हम्म उसको वो बाहर से देते हैं। बट ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स। या अगर आप यहाँ से अलाइन हो जाएंगे, देर इज नो नीड टू टेक केमिकल फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, जो बाहर से केमिकल देते हैं, हार्मोन्स देते हैं, किसी इट्स हार्मोन्स, सो दे माइट वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यस, ऑफ कोर्स, बट ऑफ आई कोर्स। थिंक पीपल डजंट अंडरस्टैंड कि जब हम इस केमिकल को कंटिन्यूअसली बाहर से देते हैं तो आवर बॉडी विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट बिकॉज इट थिंक्स उसको कि लगेगा ना, आ रहा है मेरे जरूरत नहीं है को, उसको, उसको जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। एंड दैट दैट इज, इज द रीजन वाई द डोजेस बढ़ते जाता है। हाँ, वही, दैट आई इज थिंक दिस हंड्रेड इज वेरी परसेंट वेरी वैलिड पॉइंट कि 100% ट्रू। our body has the capability of doing it, but when प्रोड्यूसिंग एवरी काइंड ऑफ केमिकल्स, एक लाख yeah, चौदह हजार 1,14,000 केमिकल्स, हार्मोन्स आर बीइंग क्रिएटेड एवरी डे बाय दिस ब्रेन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री यही है, yes. हमारे अंदर ही है। So this is one point the audience should take is the biggest chemical factory is our own body, so our यस, own यहाँ पर। mind. हाँ, own यस, mind. So don't think कि छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दे दिया मेडिसिन, आपको इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगा बट इट्स नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन. So यस, work on परमानेंट your सॉल्यूशन नहीं mind. है। So again, we come back to the same thing. यस, Meditation यस, and mindfulness techniques are the thing माइंडफुलनेस। which can यस, actually keep you happy and यस, healthy. यस, 100%, Correct? 100% ट्रू। So, Mr. Hota, how much time? Suppose मेरे पास time नहीं है, I'm very busy person. So, यस, if I have 10 minutes of time every day, is it good enough for doing any meditation? And it will be टाइम, impactful? people, many people say I don't have time. I Ah, don't understand for why. it's okay. Look, you might have heard about an advertisement कि एक आदमी ज्यादा पी रहा था, he was a true drunkard, हाँ 24 hours drinking। हाँ लोग, बीबी बोलेगी नहीं छोड़ेगा, पापा बोलेगी नहीं छोड़ेगा, मम्मी बोलेगी नहीं छोड़ेगा। हाँ बट द डे डॉक्टर सेज दिस इज लास्ट टाइम, अगर छुआ, यू विल बी नो मोर इन दिस अर्थ, हम्म एक हफ्ते में तुम मर जाओगे, विल यू टेक एनी मोर? yeah true एग्जैक्टली, मोस्ट पीपल थिंक आई एम सो बिजी, बिजी फॉर व्हाट? अरे जिंदा रहोगे तभी तो करोगे ना। correct हाँ absolutely इफ यू आर गुड एट हेल्थ, अगर आप सही हो, देन यू कैन हेल्प योर बेबी, देन यू कैन हेल्प योर वाइफ, देन यू कैन हेल्प योर मदर फादर। बट तुम ही हम्म ठीक नहीं रहोगे, देन हम्म व्हाट अबाउट दैट मनी, व्हाट अबाउट दैट वर्क? राकेश झुनझुनवाला 40,000 करोड़ 62 में चला गया। correct हाँ द इशू इज वी आर मोर फोकस्ड। आपने जो बोला हम्म ना, बहुत लोगों का ये इशू होता है कि मैं बिजी हूँ। बिजी फॉर व्हाट? हम्म बिजी फॉर व्हाट? एंड true देखो, हम जो पैसा भी कमाते हैं, वट एवर वी इन्वेस्ट फॉर होम, the thing is true that invest, do everything, doesn't matter, हम्म but find at least half an hour for yourself, invest some time for yourself, so that you can make your brain cool and calm, you will align it with your energy, then आप जो भी काम करोगे उस पर टॉपर बन जाओगे, yeah. उसमें आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा, उसमें आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। दिस हम्म इज द क्रक्स। So that's what I keep telling people. Out of that 1440 minutes per in 24 hours, if यस, you can't spend 60 minutes for yourself or 40, 30 minutes for yourself, यस, it's not worth living. नहीं, यू आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ, यू आर नॉट Yeah. गोइंग टुवर्ड्स लिविंग वेल बीइंग। सो इफ यू वांट वेल बीइंग, हाँ, सिंपल सा बात है, देखो, एक बच्चे को अगर टाइम से पढ़ाई नहीं करेगा, ही कैनॉट अंडरस्टैंड। एक स्विमर है तो उसको टाइम देना पड़ेगा स्विमिंग के लिए, एग्जैक्टली, गुड हेल्थ के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, वी हैव टू स्पेंड सम टाइम फॉर, इन्वेस्ट सम टाइम, नॉट स्पेंड, इन्वेस्ट सम टाइम फॉर आवरसेल्व्स। yeah, correct. Okay, so let's coming to the physical health. Why do people actually wait for illness before taking care of their body? How can we change this mindset? There is a mindset कि भैया let the illness come, then we will see. यस, Instead of taking care of that illness beforehand. जैसे आपने बोला था ना
कि जब डिस ईज होता है तो इट्स एक्चुअली बॉडी इज गिवन इंडिकेशन कि भैया मैं खराब हो रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे या ये चाहिए। सिग्नल दे रहा है, तो सिग्नल। ये तो माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? ओके, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको पूछता हूँ, बड़ा सा छोटा एग्जाम्पल। मैं जब बच्चा था ना, पापा बोलते जाओ इलेक्ट्रिक बिल भर के आओ। आपने कब भरा? कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ लास्ट हाँ। डेट 5 है, आप कब भरते थे? अब हो सकता है कि कल खत्म हो रहा डेट, तो आज चले जाओ, या तो आज लास्ट डेट है। ऑलमोस्ट ये मेंटालिटी सबके साथ है, हाँ। मोस्ट लोगों के साथ, 90% लोगों के साथ ये मेंटालिटी है। क्योंकि वी डोंट नो फ्रॉम वेयर वी टेक दिस डेटा। लास्ट डेट हमें ये नहीं पूछते कि स्टार्टिंग कब हो रहा है। देखिए, कोई एडवर्टाइजमेंट आया ना, दोस्त एक दूसरे को पूछता है लास्ट डेट कब हो। लास्ट डेट, अब हाँ सबसे देखिए पहले वही पूछेगा। हम का क्या है, सब हम लोगों का बिलीफ है, वी हैव बिलीव लास्ट डेट। हाँ। सो माइंड फोकस किया क्या, लास्ट डेट 5 तारीख को भरना है। अब हम्म। 5 तारीख को आपका वेबसाइट बंद हो सकता है, 5 तारीख को बिजी हो सकता है सर्वर, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। बट वी 5 तारीख को हम जाके 100 लोग के बीच खड़े होके भरेंगे, पर हम 1 तारीख को जाके 10 लोग के बीच नहीं भरते। इट्स हम्म। माइंड सेट, इट्स फोकस। आपने जो पहले बोला ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म। अभी मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज एक टीचर्स को एक वर्कशॉप ले रहा था, छोटे से इंट्रोडक्टरी। तो उनको बोला कि आई वॉन्ट 2 आवर्स ऑफ योर्स, 2 आवर चाहिए जिससे आपको मैं मेंटल डिटॉक्स कर सकता हूँ। बोले सर टाइम कहाँ है सर? हाँ, टाइम कहाँ है? ए मैं आस्किंग फॉर माई सेल्फ, आई हैव डन इनफ फॉर मी। मैंने, मेरा अपना एजुकेशन है, मेरा आपका सब कुछ हो गया। आई जस्ट वांट टू सपोर्ट देम। बट बोले सर हाँ। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, आज नहीं है। बट अगर वही इंसान हॉस्पिटल में चला जाएगा, उसके पापा मम्मी भाई बहन को कोई, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, हॉस्पिटल में उसके पास बहुत टाइम आएगा, हम्म। बहुत पैसा भी आएगा देने के लिए वहां पर। हम्म। कहाँ से आया वो टाइम? ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। इट्स अबाउट योर फोकस। आपका ही फोकस है। तो आप जैसे बोल रहे हो ना, लोग हॉस्पिटल में जब नहीं जाते तब तक बोलते हैं मैं अच्छा हूँ। हम्म। क्योंकि लास्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा लास्ट, लोगों के पास रहता है, लास्ट डेट। आई थिंक, हाँ बहुत लास्ट डेट अच्छा कब है? कॉन्सेप्ट है ये। लास्ट डेट क्योंकि वाला। यही तो ना, देखिए बहुत कॉमन सेंस है। आप देखिए कहाँ पर भी, मैं ये उड़ीसा की बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में देखिए आपका, मोस्ट लोग लास्ट डेट को वेट करते हैं। यस यस। तो दिस शुड बी चेंज। ये हम्म। फोकस चेंज, वही तो एजुकेशन है। आपका एजुकेशन डजंट मीन कि आपके पास डिग्री है, आप किस किस पद पर है, वेदर यू एन आईएएस ऑफिसर डजंट मैटर। उनके साथ भी वही इशू है, यस यस, एवरीबॉडी हैव दैट। पर्सनल लाइफ में उनके साथ भी वही इशू है। हम्म। सो वी हैव टू चेंज इट फोकस, कि नहीं, हम्म। हमें कौन सा काम कब करना है, दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आपका प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी करना है, अर्जेंट है। तो वो सब अगर हम प्रायोरिटी में लिस्ट में सेट कर देंगे, देन आई हम्म। थिंक वी आर एबल टू फाइंड टाइम फॉर एवरीथिंग। एंड वो जो आपने बोला ना, हॉस्पिटल जाने से पहले हम सोचते हैं कि हम इल है, हम्म। दिस इज लेकिंग ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर, दैट्स व्हाट, जैसे कि टू लास्ट डेट बोला योरसेल्फ। ना आपको, बाद में 1 तारीख भर सकता है, पर व्हाई इज वेटिंग फॉर लास्ट डेट? हाँ, ट्रू ट्रू। इट्स अबाउट माइंडसेट, ये आपका माइंड में फिक्स है, बिलीफ सिस्टम है यहाँ पर आपका। हाँ, बिलीफ सिस्टम, देखिए एब्सोल्युटली। बिलीफ के बारे में मैं कल ही एक बोल रहा था, जैसे जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, न्यू इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन में फायरिंग होता है, 2 न्यूरॉन्स, ऑलमोस्ट 80 बिलियन न्यूरॉन्स है ब्रेन में। अब करेक्ट। आपका जो मेमोरीज होता है, जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, सपोज आपने, मैंने बोल दिया दिस इज दिस, ब्रेन ने आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन फायरिंग करता है। न्यूरल पाथवे बन जाता है। फायरिंग होता है फर्स्ट स्टेज में। अगर इसको ज्यादा बार सुन लिया आपने उसको, लास्ट डेट लास्ट डेट, आप एसएससी का फॉर्म लास्ट डेट, बैंक का फॉर्म फॉर लास्ट डेट, सिविल का फॉर्म फॉर लास्ट डेट, सुनते सुनते आपका क्या ना, लास्ट डेट आ जाता है, तो धीरे धीरे उसका वायरिंग हो जाता है, या स्ट्रांग हो जाता है वो पाथवे। अगर उसने 100 बार आपने सुन लिया, 500 बार सुन लिया, 1000 बार सुन लिया, तो इसमें एक माइलिन, आपका एक इंसुलेशन, केमिकल होता है, इंसुलेशन आ जाता है। इंसुलेशन होता है उसके ऊपर उसका कवरिंग हो जाता है, इंसुलेशन। तो इतना न्यूरोप्लास्टिक। स्ट्रांग हो जाता है ना बिलीफ सिस्टम। अब देखिए बहुत बड़े लोग होते हैं, बस उसका बिलीफ सिस्टम कुछ बायस होता है, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रांग। तो ये सिस्टम है हमारे ब्रेन में, जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होएगा। एंड फॉर दैट पीपल डोंट बिलीव कि मैं, मुझे कुछ करना चाहिए, until या, unless they are in hospital. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। सो हाउ, लाइक आज के डेट पे लोगों के पास स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। दे Yeah. डोंट हैव टाइम। इवन अगर आप, इवन फॉर चिल्ड्रन यू सी, दे डोंट गो एंड प्ले आउटसाइड। वो जब Yes. भी टाइम मिलेगा, या तो मोबाइल पे बैठेंगे या तो कंप्यूटर पे बैठेंगे। 100%. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल हेल्थ? when we talk about emotions, emotional health अलग है, emotions अलग है, but are the physical health, physical exercises also related to emotions? They impact each other? 100%। आपका देखिए जब मूवमेंट होता है ना, बॉडी मूवमेंट होता है ना, एनर्जी फ्लो होता है आपका। हम्म। छोटी सी बात बताता हूं आपको, यू कैन ट्राई दिस नाउ।
आपका जो पीठ है ना, थोड़ा नीचे कीजिए, हाथ को ऐसे दीजिए, बैठिए। So yeah, यू you कैनॉट feel स्माइल, low. यू कैनॉट स्माइल। Yes. आप अगर सर नीचे है, इफ यू सिट लाइक इन दिस पोजिशन, यू कैनॉट स्माइल। True. आर्मी पोज, यू Uh, रेडी फॉर वेटरन, सो physics. आर्मी पोज, चेस्ट ऊपर, मुंडी ऊपर, you cannot be in sad Serious. position, you True. cannot be in sad position. This is very important. Movement जहाँ होता है ना, एनर्जी फ्लो होता है, Hmm. इसे कहते हैं मोमेंटम। Hmm. मोमेंटम जहाँ होता है ना, एनर्जी वहीं फ्लो होता है। Hmm. आप कितने ज्ञानी हो, कितने पंडित हो, अगर दिन भर ऐसे बैठे रहेंगे चेयर के ऊपर, ऐसे लेटे रहेंगे ना, यू बिकम लेजी। Yeah. आपको पढ़ाने का मन नहीं करेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा, Hmm. बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग दैट। इट्स अबाउट फिजिकल मेमोरी, सॉरी, मसल मेमोरी। Muscle memory. इट्स अबाउट मसल मेमोरी। अब जैसे Hmm. साइकिल चलाते थे बच्चे में, 2-4 बार गिरे, 5 बार ब्रेक दिया, 30 बार, बट 30 टाइम्स के बाद हम बात भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। इट्स Hmm. कम्स टू मसल मेमोरी। तो मसल इज हमारा, और एक ब्रेन जो बोलते हैं ना, वो मसल में भी होता है, ब्रेन उसका भी ब्रेन होता है। तो जब हम मसल को यूज करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा जो भी करते हैं, इसमें क्या होता है ना, एनर्जी फ्लो होता है। जैसे Hmm. कि सपोज ए रूम है, मैं मेरा सारा डोर है, विंडोज बंद करके बैठूंगा, हाउ मच टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, 60 आवर्स, बदबू आता है इससे। True. When I allow flow phase, exactly, it maintains its own sanity. मुझे Hmm. फ्रेशनेस लाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है ये। Yeah, yeah. True, तो true. व्हेन यू मूव, जब आप मूव, देखिए इसीलिए जो पुराने लोग होते हैं ना, अप टू 80-90 दे आर स्टिल फाइन। Even उनके farmers, even farmers are laborers. गांव के लोग ज्यादा मेहनती हैं, गांव के लोग. दे आर डूइंग मच फिजिकल वर्क, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग देयर ओन स्ट्रेंथ। वो Yes. जो लोग मच बहुत टाइम एसी में रहते हैं, दे डोंट डू फिजिकल एक्टिविटी, डजंट मैटर कौन सी पोस्ट पे है, Hmm. दे आर इन हॉस्पिटल, Hmm. दे आर इन हॉस्पिटल, बिकॉज मोमेंटम नहीं होता। जब मोमेंटम नहीं होता, एनर्जी फ्लो नहीं होता। जब एनर्जी फ्लो नहीं होगा, आपका 7 चक्र बैलेंस नहीं है, 7 चक्र बैलेंस नहीं मीन्स यू आर एबल टू गो फॉल इन, डिजीज वहां से आ जाएगा। सो मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक कहावत है, लास्ट टाइम पढ़ा था कहीं पे, हम सोचते हैं हम बूढ़े हो गए इसलिए खेलते नहीं है, वी Hmm. थिंक ओल्ड दैट्स वी आर नॉट प्लेइंग, बट रिवर्स इज ट्रू, वी आर नॉट प्लेइंग दैट्स वी आर ओल्ड। Absolutely. I think that's a very, very valid point. वी Hmm. आर नॉट प्लेइंग दैट्स वी आर ओल्ड। हमें Hmm. सोचते हैं हम बूढ़े हो गए यार, हम नहीं खेलते। Hmm. रॉन्ग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है कि आप खेलते नहीं इसलिए बूढ़े बन गए आप। Yeah, absolutely. True. So this should be in our mind. Hmm. So physical movement, exercise, movement, very, very essential. So I think two very important points आपके इस discussion से आया है. So one is if you see nowadays all those diseases which are supposed to come at 40s and 50s, diabetes ले लो या फिर आपका BP ले लो या Yeah. cardiovascular problems ले लो, Yeah. they're basically coming in 20s 30s में भी आ रहा है. It's basically Yes, because even there is small absolute. babies. Small babies. I have seen small babies, school Even going small babies. babies, yeah, मैं थोड़ा सा Yes, और आगे they are चलेंगे. Small suffering. babies is basically because they're not having physical exercises, Yes, one enough of physical physical exercise. They're activities. not aligned with their emotion. Two things. हाँ. Two things. And second very important thing what you told is laziness. Now like Yes. people say कि 40 50 60 years हो गया, मैं रिटायर हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा. So then that's a, I think the word retirement is a negative word, Yeah, of because course. the moment you say कि मैं कुछ नहीं करूंगा या मैं रिटायर हो गया, your mind stops working. And the moment your mind stops working, your body also starts Of degenerating. course. Of course. So I think these are two very, very valid points. हाँ, तो फॉर दिस आपने जो बोला ना रिटायरमेंट, इसके लिए मेरे पास कुछ बताइए. डिस्कशन हो रहा था। हाँ, रिटायर, टायर. आपको जो टायर था ना, वो टायर पुराना हो गया, फेंक दे उसको, निकला, अब नया टायर लगाया है, ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको। रिटायर. ओके, ग्रेट. आफ्टर 60, जैसे कि आपको देखते हैं ना, Formula 1 स्पोर्ट्स में देख रहा था मैं आज बच्चों के साथ बैठ के, 1 मिनट में उसके टायर चेंज करते थे हम लोग। 1 मिनट, 30 सेकेंड्स, एक मिनट थर्टी से, हाँ, सेकेंड 30 सेकंड, आया फटक चला गया वो। देखा मैंने. हाँ. एग्जैक्टली, दिस इज द केस फॉर रिटायरमेंट पीपल। हम्म. टायर वर्न आउट हो गया भाई, तुम्हारा टायर हम नया निकाल रहे हैं, नया लगा रहे हैं, अब दुनिया के लिए काम करो। हाँ. सॉरी, आप म्यूट हो गए सर. हेलो। हाँ, सॉरी. हाँ, तो आपका टायर वर्न आउट हो गया, टायर हाँ, बदल दिया हमने, रिटायर हुआ मतलब हमने आपको फूल माला पहनाया, रिटायरमेंट का ऑर्डर दे दिया, अब हाँ. नया टायर लगा, नया काम करो, डू न्यू वर्क। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. रिटायर, आई थिंक मेरे को भी अच्छा पॉइंट मिल रिटायर। गया. अच्छा, सो हाउ कैन somebody actually listen to their body signals before it becomes, like आपने बोला डिस इज, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ एक्चुअली.
सो यस। दिस इज, तो कैसे लोगों को समझ में आना चाहिए कि भैया अब समझ जाना चाहिए, आगे चलकर इट्स गोइंग टू बी मोर सीवियर। सो सम सिम्टम्स फ्रॉम योर साइड। यस यस यस। बहुत सिंपल सी चीज है। आप जब खुद को ऑब्जर्व करेंगे ना, इफ यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, आप बोलते हैं मुझे सुबह 5 बजे उठना है। हम्म। सभी के दिल में होता है आई हैव टू गेट आउट 5 o'clock। आप कितने टाइम उठते हैं? इट मीन्स देर इज नॉट अलाइनमेंट। आप करना कुछ चाहते हैं, फिजिकल आपका जो बॉडी मसल मसल कुछ और बोल रहा है। हम्म। मसल इज True. टू टेल दिस इज नॉट अलाइनमेंट। हम्म। आप आपके घर वाले से आपका रिलेशन कैसा है? व्हाट इज योर रिलेशन विथ यूर सेल्फ? खुद के साथ रिलेशन कैसा है? आप जब आईने में देखते हैं ना, आप कैसा फील करते हैं अपने बारे में? आप तो अरे हम्म। यार आई एम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, या हम्म। फिर बोलते हैं अरे यार क्या जिंदगी है, घिसी पिटी जिंदगी चल रहा है यार, हाँ, वही जिंदगी। पता लग जाता है, हाँ। सेकंड थिंग, आपके व्हाट इज इफ यू मैरिड, व्हाट्स योर रिलेशन विद स्पाउस? हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट द रोमांटिक केमिस्ट्री, और बस चलता है, हम्म। हाँ खाना पीना दियो, खाओ पियो सो जा, और देयर इज केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ यू? हाउ योर रिलेशन विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हाउ योर रिलेशन विद फादर मदर? ट्रू। जो काम आप कर रहे हैं, इफ इन जॉब और इन बिजनेस, व्हाट इज योर इमोशन फॉर दैट? उसके लिए हम्म। आप क्या सोचते हो? अरे यार हम हम्म। डिड ग्रेट वर्क। क्या काम कर रहा है यार, बस वही चलता है, चल रहा है बस जिंदगी। बस चल रहा है जिंदगी। और थिंग स्पिरिचुअलिटी, क्या आप डोनेट करते हैं? अगर आप डोनेट करते हैं, इमोशन कैसा है? जब हम्म। भिखारी को 50 रुपए देते हुए लगता है कि साला क्यों आए मेरे पास, या फिर ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं, आज सो ग्रेट, मुझे भगवान ने आज अपॉर्चुनिटी दिया मुझे डोनेट करने की। एब्सोल्युटली। अगर आप इस छोटी छोटी चीज को देख लेंगे ना, इफ गिव मार्क्स आउट ऑफ 1 to 10, आप मार्क दे दीजिए, आपको पता चलेगा व्हाट्स योर परसेंटेज। हम्म। ट्रू। आपका परसेंटेज आ जाएगा। इफ इट लेस देन 60, यू आर वेरी सीरियस कंडीशन, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। हम्म। अगर नहीं तो ये क्या होगा आगे चल के, ये आपको बीपी, यही आपको डायबिटीज, यही आपके जो मोटापा ओबेसिटी सारे चीज है ना, इससे ही आता है। हम्म। तो दीज आर द सिग्नल्स, ये बॉडी हमें सिग्नल देता है। हम्म। अगर आपको किसी को देख के गुस्सा आता है, बॉडी से यू आर एट फॉल्ट, वो इंसान का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तेरा है, बिकॉज यू या। आर नॉट अलाइन विद इमोशन, तुम इमोशन को अलाइन नहीं कर सकते। हम्म। सो दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। उन्हें लगता है कि गुस्सा करना सही है, उसने मुझे गाली दिया मैंने गुस्सा कर दिया। हम्म। अरे वो गाली देना उसका काम है, व्हाट इज योर ड्यूटी? तुम्हारा काम अलग है ना, यू चॉइस। तुम गुस्सा करो, या फिर से बोलो ठीक है भाई चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिल जाए तो गले मिल जाओ, बोलो आई लव यू। ट्रू। ट्रू। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। इफ या। यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर एट रिस्क। दिस आर इंडिकेटर्स, बेसिकली दिस आर द इंडिकेटर्स आई जिससे हम थिंक। पता चल सकता है कि वेदर माई एनर्जी बॉडी इज गुड और नॉट। एंड हम्म। वो एनर्जी बॉडी आपका 2 साल पहले डिजीज एनर्जी बॉडी में आता है, आफ्टर 2 years इट कम्स टू योर फिजिकल बॉडी। हम्म। अगर आपने आज ये कर लिया ना, तो 2 साल बाद आप हॉस्पिटल में होने वाले थे वो नहीं होगा। हम्म। एंड हाँ, मोस्ट आई थिंक पीपल डोंट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। अंडरस्टैंड दैट। उनको लगता है यस कि यस यस। इंस्टेंटली आता है, बट नो एवरीथिंग, नेवर। नेचर टेक्स इट्स ओन टाइम, वो इट्स आने में फर्स्ट, टाइम लगेगा। यस फर्स्ट इट इज द सिग्नल इट गिव्स इन द एनर्जी बॉडी, क्योंकि आपको एनर्जी बॉडी में सिंबल देता है कि आई एम नॉट गुड, डू समथिंग फॉर मी। ट्रू। हम्म। अगर आपने वहां नहीं किया, देन कम्स टू फिजिकल बॉडी, बोलेगा अरे अब तो कुछ कर ले यार, हाँ। अभी मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी नहीं करे, देन यू नो इट मल्टीप्लाइज, इट मल्टीप्लाइज। सो फिजिकल इज सेकेंड, एनर्जी इज फर्स्ट। एनर्जी फर्स्ट, फर्स्ट इट इज सोन एनर्जी बॉडी। और जनरली 90%, 95% ऑफ द पीपल ओनली व्हेन इट कम्स टू फिजिकल दे थिंक कि यस, कुछ उनको एक्शन लगता है लेंगे। हाँ तब लगेगा फंक्शन। एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द केसेस फिजिकल में जब जाते हैं, दे गो टू एलोपैथी मेडिसिन, फॉरगेट हाँ एनी काइंड ऑफ इंस्टेंटली। मेडिसिन, बट यू नो लुक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन वो केमिकली देंगे आपको। हाँ, केमिकली एनी देंगे। काइंड ऑफ मेडिकल से केमिकल, इसको बोलते ओके। हैं केमिकल लोचा। केमिकल केमिकल लोशन। लोचा मीन्स नथिंग, हाँ। ब्रेन स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग दैट केमिकल। जैसे कि केमिकल। आपको नोकिया का हुआ, नोकिया का क्या हुआ? नोकिया सेट वर्ल्ड में नंबर 1 था। हाँ। जब उसने एंड्रॉइड को अपनाया नहीं, लोगों ने धीरे धीरे लेना बंद कर दिया, तो दुकान वाले का सेल कम हो गया। दुकान वाले डीलर को बोला हम तुमसे नहीं लेंगे, डीलर ने बोला सब सुपर डीलर को हम तुमसे नहीं लेंगे, सुपर डीलर ने बोला कंपनी को हम नहीं कर देंगे भाई। तो कंपनी क्या किया, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम किया, प्रोडक्शन कम किया, एंड एट द एंड बंद स्टॉप्ड। कर दिया। एग्जैक्टली अगर हम वो केमिकल को जो रिलीज करना चाहते हैं, डोपामाइन सेरोटोनिन एंडोफिन्स, हम अगर खुश नहीं रहेंगे ना, हम हमेशा सोचेंगे अरे श्रीनिवास वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर हम हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे और हमेशा जजमेंट करते रहेंगे लोगों को, तो क्या होगा ना, अब या ब्रेन समझ लेगा कि नहीं उसको ये चाहिए, ना ही वो वही वांट, देगा, वो वही देगा। उसको ये बैड केमिकल चाहिए, नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट कॉर्टिसोल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कॉर्टिसोल। तो अगर आप खुश रहेंगे, छोटी बात जैसे कि आपका ग्रेटिट्यूड, छोटी सी बात है, जैसे मेरे पास पानी का बोतल, अरे यार सो ग्रेटफुल यार, मुझे पानी पीने के लिए पानी है, हम्म। मुझे श्रीवास सर ने बुलाया पॉडकास्ट, आई एम सो ग्रेटफुल।
छोटी छोटी बातों में ना बोलेंगे, अरे आई हैव अ ड्रेस टू वेयर, आई हैव या इनफ फूड टू ईट, ये करेंगे ना तो ब्रेन क्या समझेगा, अरे उसको चाहिए अच्छा चीज, ग्रेटिट्यूड, तो So I think दिस इज मिसिंग, the very important point from this is gratitude is so very important. वेरी People इंपॉर्टेंट. don't realize that, even but even 90% people they don't understand what is gratitude. what is gratitude? Even people fight with me, अरे मैंने उसको पैसा दिया खरीदा, मैं क्यों थैंक यू बोलूं? हाँ, सही बात. पैसा दिया, उससे सब्जी खरीदा, थैंक यू क्यों बोलूं उसको? वो हाउसकीपिंग वाला बंदा है, उसका साफ करने का काम है, तो उसको हाँ, क्यों मैं क्यों थैंक यू थैंक यू बोले? क्यों बोलूं? थैंक यू बोलूं. अब बोलने से नहीं बोल सकते, अभी उसका कुछ नहीं होगा. इट उसका इफेक्ट्स आवर सेल्फ, हमारा यस. माइंड में उसका ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा. हम्म. जब बोलेंगे फीलिंग के साथ तो माइंड अंडरस्टैंड करके, नहीं उसको अच्छा चीज चाहिए, चलो थैंक यू थैंक यू, आपको कोई बोल देगा, हम्म. आप नहीं बोलेंगे, आपको कोई नहीं बोलेगा. ट्रू, ट्रू. दिस इज व्हाट इज द क्रक्स. दिस इज एक्चुअली पावर, आई थिंक. दिस यस, इज द वही तो रूट एनर्जी है ना. कॉज. दिस इज द यही तो रूट एनर्जी कॉज. आपका. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरीथिंग हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. रिएक्शन. आप जो बोलेंगे, आप ग्रेटफुल, मैं आपको ग्रेटफुल होगा, मुझे और कोई ग्रेटफुल हो जाएगा. आज ना हो सकता है, 5 साल बाद तो होगा, बट होगा. पर मैं आपको भी गुस्सा करूंगा तो ब्रेन अंडरस्टैंड, उसको कोर्टिसोल चाहिए, प्रोड्यूस मोर कोर्टिसोल. देन कोर्टिसोल इज द ओनली थिंग, बीपी, आपका डायबिटीज, मोटापा, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एवरीथिंग कोर्टिसोल ऑन ओनली. कॉर्टिसोल. या. यस. ग्रेट. आई थिंक बहुत डिस्कस हम लोग बहुत डीप चले गए, लोगों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा. एनर्जी लेवल्स तक पहुंच गए हम लोग, कहाँ कहाँ चले गए. चलो, लेट्स कम टू द गट हेल्थ. तो व्हाई पीपल जनरली से गट इज द फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ. व्हाट इज द साइंस यस, बिहाइंड इट? थोड़ा सा फॉर माय ऑडियंस, कैन यू थ्रो सम बिफोर आई लाइट? से आई लाइक टू शो a book to you. या. माइंड गट कनेक्शन. ओ, Connection. आई आल्सो रेड दिस. यस, आई वाज रीडिंग दिस बुक. इसमें से जो क्रक्स है मैं आपको बोल देता हूँ. लोगों को लगता है कि हमारा जो इमोशन होता है ना, वो ब्रेन से आता है, बट ये बुक कहता है कि इट कम्स फ्रॉम योर गट. हम्म. अब जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली दे आर आवर मूड कंट्रोलर्स. वो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं. तो जब वो बैक्टीरिया खुश मूड में है तो हम खुश हैं. इसलिए आप देखेंगे ना, जिसके पास कंस्टिपेशन होता है वो लोग कभी खुश नहीं होते जनरली, हम्म. क्योंकि उसके बैक्टीरिया जो होता है ना, वो बैक्टीरिया उसका जो अपना स्टेट होता है ना, उस स्टेट में नहीं होता है. एंड वो करोड़ों में है, इट्स इन क्रोर्स, हम्म. क्रोर्स में है बैक्टीरिया. हम्म. सो जब हम कोई फूड खाते हैं ना, बाहर का फूड, इट इफेक्ट्स दिस बैक्टीरिया हम्म. एंड मोस्टली दे डाई. हम्म. अगर उनको उनका फूड मिल गया, देन क्या होगा? दे सर्वाइव, दे मोर सर्वाइव. जब वो सर्वाइव करेंगे ना, दे मेक आवर बॉडी फाइन, दे मेक आवर मूड गुड. हम्म. मूड इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली. So what सो you want to say is the food we eat also actually changes our gut, our mood, our immunity, everything. यस, ऑफ कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेस अ वाइटल रोल, वेरी Oh, वाइटल रोल. okay. यस. I think this is a point for my audience to listen to. The food we eat, यस. your also plays a very important role on your mind यस. state and your यस. यस. mind swings, यस. your anger issues, and all those things. Everything, mostly the And food that controls our body mostly. and one more thing you told ki we have trillions of bacteria in Yes, our in our gut, in our gut. गट. सो ये मतलब लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में क्या कर रहा है. बैक्टीरिया, दिस इज वेरी हेल्पफुल. क्योंकि बैक्टीरिया तो आपका हमको जो, हमको यही बोला गया ना, बैक्टीरिया अगर अटैक होगा तो आपको हाँ, फीवर होगा, ये बैड होगा. बैक्टीरिया, देयर बैड बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस बहुत है. बट हाँ. हियर इनसाइड बॉडी में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बेसिकली दे आर आवर हेल्पिंग, इकोली बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, हेल्पिंग फॉर डाइजेशन. जैसे कि ओके. बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया गट में है, एंड दे आर रियली देयर टू हेल्प अस, हमें हेल्प करने के लिए वो लोग हैं. अगर हम उनका केयर करेंगे तो अल्टीमेटली दे विल गिव अस गुड मूड. अगर देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बोलेंगे कैसे, यहाँ से कैसे हमारा मूड जनरेट होता है. जो लोग फ्लाइट में जाते हैं ना, उनको कभी कभी फ्लाइट में एक फीलिंग आता है, फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त आपका फीलिंग कहाँ आता है? यहाँ आएगा आपको, हाँ, स्टमक में आता है. हाँ. डाउन में आएगा, या फिर हम्म. आपका टेक ऑफ या टेक ऑन करेगा तो हम्म. यू गेट सम काइंड ऑफ सेंसेशन ओवर हियर, हम्म. आपका यहाँ पर नहीं आएगा. सो True. दीज आर स्मॉल इंडिकेटर्स दैट गट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गट इज नॉट ओनली अ डाइजेस्टिव मशीन, ये मशीन नहीं है. हम्म. It has many functions. Out of that, digestion is one of them. Okay. So basically, mood इसी बैक्टीरिया से होता है. So when we take care of this bacteria, it helps us generating good mood, हम्म. and then we can enjoy life. सो इज इट ओके टू से दैट अगर हमने किसी इंसान ने अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर लिया,
means he is Yes. having healthy food which is good for our Yes. bacteria. Yes. So to some extent he can control his emotions and thoughts also. ऑब्वियसली देखिए, हम कहाँ से आए हैं? वी आर बोर्न फ्रॉम नेचर, पार्ट ऑफ नेचर, प्रोडक्ट ऑफ नेचर। Hmm. अगर हम नेचुरल फूड खाएंगे, ऑब्वियसली इट अलाइंस, वही अलाइंस बात आ गया, वही Alignment होगा। सिंक्रोनाइज की बात आ गया। हाँ। अगर हम जंक फूड खाएंगे जो सड़ा होता है, 1 महीने 2 महीने पड़ा होता है कहीं पर, हम्म। दोज फूड्स इफ यू ईट, तब क्या होता है ना, द बैक्टीरिया आर किल्ड, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं उस फूड से। हम्म। तो जिससे क्या होता है ना, हम तो फूड खा रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो फूड जा रहा है ना, एक्चुअली इसके साथ एनर्जी जा रहा है। जैसे कि आप सलाद खाएंगे, सलाद में क्या होता है आपका, हरी वेजिटेबल होता है आपका, टमाटर, सो कुकुम्बर, दोज थिंग होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। अगर हम किसी चीज को ज्यादा मसालेदार खाएंगे, यू कैन फील द डिफरेंस। आप खा के देखिए ना, क्या? आपका टॉयलेट भी कैसा खराब लगेगा आपको, आपका सब कुछ। अब जिस दिन आप ज्यादा खाएंगे तो आपको अच्छा फील ही नहीं होगा आपको, हम्म। क्योंकि यही तो इंडिकेशन है ना आपका। अरे मेरे को हंसी इसलिए आ रहा है जनरली हम बोलते हैं ना आउटिंग के लिए जाएंगे तो घर का खाना खाते बोले हफ्ते में एक दिन आउटिंग के लिए जाएंगे, वहां पे 1000 2000 रुपये खर्चा करके आते हैं, उसके बाद पेट खराब हो जाता है एंटासिड खाते क्या होता है, वही है, बस सिंपल है, और कुछ नहीं। देखो, कॉमन हैं। सेंस लगाएंगे ना, आप होटल में खाएंगे, जाएंगे कहीं बड़े बड़े होटल में खाएंगे, एक बार दो बार ठीक रहे, अगर आप कंटिन्यूस 3 4 दिन खा लेंगे ना, तो आपका, वी कैन फील कि आपका या। बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जब ज्यादा मसालादार खाना, ज्यादा ऑयली फूड आप खाएंगे, जंक फूड, इट्स वेरी इंडिकेशन, इंडिकेशन ही है बस, और कुछ नहीं है। नो साइंस, साइंस छोड़ दीजिए, बस कॉमन सेंस लगाएंगे ना, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। अच्छा, ठीक है, एक और पॉइंट मेरे को ये आ रहा है कि हम जनरली बोलते हैं ना वेन एवर यू हैव टू टेक अ डिसीजन यू थिंक फ्रॉम योर माइंड इंस्टिंक्ट, हार्ट नॉट फ्रॉम योर माइंड, सो ये माइंड और हार्ट का क्या कनेक्शन है? वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, जो मोस्टली हमें एजुकेट नहीं किया गया है स्कूल में। बायोलॉजी में हमें पढ़ा जाता है कि ये हार्ट की अलग पंपिंग अलग होता है, पार्ट्स है ब्रेन बोल ऐसा के। होता है, बट देयर इज कॉल्ड वेगस नर्व। एक वेगस नर्व होता है वो। ओके। वेगस नर्व क्या है? वेगस नर्व कनेक्टेड बिटवीन ब्रेन से हार्ट से कनेक्शन है उसका, एंड हम्म। टू वे कम्युनिकेशन, इट्स नॉट वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। और वेगस नर्व क्या करता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, वो हार्ट, माइंड से, हार्ट से आता है। एंड हार्ट का भी कुछ, हार्ट इज नॉट ओनली पंपिंग मशीन, हमें यही बोला गया है ना, वी हम्म। टोल्ड कि इट्स अ पंपिंग मशीन, ट्रू। but it is not a pump, it radiates electromagnetic waves, या इट हैज हेल्प। how are connected। देखो, एक कोई नए इंसान, किसी से आप पहले बार मिले हो, बट आपको लगेगा कि ये सही इंसान है, 50 60% यू कैन जज। हाउ? इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हार्ट जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ से शुरू होता है ना, वो ब्रेन को भी जाता है, ब्रेन के इसके बीच से कनेक्शन, दैट्स कॉल्ड वेगस नर्व बेसिकली। और जो वेगस नर्व यहाँ से इंफॉर्मेशन हार्ट से, ब्रेन से लेके हार्ट तक आता है, इट्स इफेक्ट इज 20%, इट्स इफेक्ट इज 20%। बट जो इंफॉर्मेशन हार्ट ब्रेन को देता है, इट्स अबाउट 80%। एफरेंट एंड इसका इफरेंट इंपॉर्टेंस, मैसेजेस या। यस, 80% इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है उसका। सो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बट द थिंग इज तो दैट हार्ट इज नॉट only pumping machine, brain is not only made of neurons, they have different activities। हाँ, आपने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला ना, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ इट इज अ मशीन बिकॉज ईसीजी जो करते हैं इट्स व्हाट इज दैट, what is इट्स एन that? आउटपुट ऑफ योर हार्ट ओनली, इट्स Yes, that's इलेक्ट्रोमैग्नेटिक all। वेव्स आ रहा है तभी तो वो दिखा रहा है ईसीजी का आउटपुट। हाँ, इसका वेव को इसके साथ कोलाइड होके ही वो इमेज इमेज निकलता यस है। यस, हाँ हाँ। सो बियॉन्ड दिस बॉडी, हम जो बोलते हैं ना बॉडी है, दिस इज नॉट बॉडी, दिस फुल हम्म। ऑफ एनर्जी। Yeah, so I think vagus nerve connects our mind to our heart to our in मेनी this thing पार्ट्स, also, gut also. या So मेनी पार्ट्स, गट, किडनी, it's, मेनी पार्ट्स। सो yeah, ओनली नॉट, दिस इज नॉट ओनली द वेगस but नर्व, three major कनेक्ट्स टू parts: मेनी the पार्ट्स। mind, heart, यस, and gut. I think these are the गट three major बेसिकली, parts which is correct. इसको Okay. बोलते हैं ना एक्सेस, एक अलाइनमेंट एक्सेस बन जाता है आपका, जब आपका हाँ। माइंड, हार्ट, गट अलाइन हो जाता है ना, Yes. देन योर थिंकिंग विल बी जो डिफरेंट, आपने योर बोला एनर्जी ना, लेवल विल बी कोहेरेंस डिफरेंट। कोहेरेंस हो जाएगा। कोहेरेंस, उसको अलाइनमेंट जो बोलते हैं, जो कोहेरेंस बन जाता है, देन यू विल बी एट ए डिफरेंट पोजिशन। Uh, so, what do you believe? Like, if you had to take some very important decision, a critical decision in your life, and यस, आपका गट बोल रहा है कि ये डिसीजन लो, इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, बट माइंड बोल रहा है कि वो डिसीजन लो, तो माइंड का सुनना चाहिए कि गट का सुनना चाहिए? देखिए, दिस इज वेरी रेशनल क्वेश्चंस, बेसिकली दिस आर वेरी रेशनल क्वेश्चंस, क्योंकि डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑल्सो। हम्म। ओके। अगर आपको मुझे बोलना है कि चलो 1 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, विदाउट एनी रिसर्च, ब्रेन बोले या फिर गेट बोले, यू शुड नॉट डू दैट। You should take logical decisions sometimes, ओके। but sometimes when it is emotional decisions, then you can rely. But if there is factual data, you have to take go for that.
जो बोलते हैं ना, देखो सपोज मैं आपको पूछ लूंगा किसी इंसान को मारना चाहिए कि नहीं, मुझे बोलिए। हम्म। मेरे पास बंदूक है, मुझे किसी को मारना चाहिए या नहीं, बस मुझे आंसर, ये सब में आंसर दीजिए। तो इसके लिए बाकी पॉइंट्स भी देखना पड़ेगा ना। दैट इज तो हम जो बोलते हैं ना वो एक पार्ट होता है, एक बहुत बड़ा से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं हम। हाँ। तो इट कैनॉट बी, लोग बोल देते ना नहीं हार्ट का सुनो, दिल का सुनो, दिल टूट गया दिल, दीज आर चालू आइटम्स। चालू और है। फिल्मी गाने होते हैं ये। नाइस इवन वर्ड। मूवीज, बॉलीवुड मूवीज है ये। इन बॉलीवुड मूवीज द हीरो इज ए पुअर गाय एंड द गर्ल इज ए वेरी रिच पर्सन। हाँ, वो जनरल लाइफ जनरली में ऐसे ऐसा ही नहीं होता होता है। हाँ। है। जनरल लाइफ डिट डजंट हैपन। यही इश्यू ना, इश्यू यही है कि हम लोग का बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया ना, हम बॉलीवुड को ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ। हीरो ने, अब वो गजनी ने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, लोगों ने गजनी का स्टाइल चेंज कर दिया। हाँ। किसी ने फटा हुआ पैंट पहन लिया, हमने फटा पैंट पहन लिया, जरूरत हम्म। क्या है? व्हाट्स द नीड? क्योंकि यही होता है ना आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो, अरे यार बॉलीवुड वो एक्टिंग करने के लिए करोड़ों लेता है, हाँ, करोड़ों। 10 करोड़ 5 करोड़ लेते हैं, एंड मूवी में जो फाइट होता है इट्स ऑल प्लान्ड। हम्म। मूवी फॉल्स है वो। ट्रू। पर स्टिल देखिए, हम जाते हैं मूवी में डिस्कस करते हैं, मूवी अच्छा था, अरे इट वाज रिटन स्टोरी। या। हम वो रहते तो हम रो लेते हैं कभी कभी, प्री इट वाज ऑल प्लान्ड, स्क्रिप्टेड है वो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मीन्स दे हैव कैप्चर्ड द प्रोग्राम माइंड इन सच ए वे, बॉलीवुड हम्म। वाले, दैट यू कैंट एस्केप। हम्म। You have become a customer for them. आप you are paying ना, या। one 800 rupees, या। 1000 rupees. You are paying for that. एब्सोल्युटली, So एब्सोल्युटली। to a false movie, false story, जो कोई हुआ नहीं, हम्म। but we are not that much concerned about ourselves. हम्म। लोगों को आपने देखा होगा 1000 रुपये दे के जाके मूवी देखेंगे, 1000 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे टू टेक देयर डेटा कि मेरा फिजिकल हंड्रेड मतलब इमोशनल कंडीशन कैसा है, दे डोंट गो एनी कोच हम्म। टेक दिस डिसीजन। अच्छा, सो मिस्टर दामोदर, एक एक क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पीपल का अलाइनमेंट गया। अभी हमने बोला था कि हार्ट यस, माइंड एंड इसका अलाइनमेंट चला गया फॉर वेरी रीजंस, लाइफस्टाइल हो गया, खाने का हो गया, थॉट प्रोसेस, सब एनीथिंग, कुछ गया। तो इज एनीथिंग, इट पॉसिबल फॉर यू, फॉर एनीबडी एल्स थ्रू एनएलपी और सम अदर टेक्निक्स टू अलाइन माइंड, हार्ट एंड गट? या 100%। इज इट लुक, पॉसिबल? मैंने आपको बोला सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बोला ना सॉफ्टवेयर, सपोज देखिए मैं मेरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, अगर उसमें सी प्रोग्रामिंग का हजारों फाइल होगा, एक फाइल डिलीट हो गया, कैन यू रन दैट लैपटॉप? नो। एरर आ जाएगा। पूरा फाइल डिलीट करने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी फाइल आपका लिंक फाइल मिसिंग हो गया, इट्स एरर। ट्रू। एग्जैक्टली यहाँ पर जो आया है ना, जब हम पैदा हुए थे उसका अलाइनमेंट इतना था, उसका जो सॉफ्टवेयर था ना इतना अच्छा था, इट इज रेडी टू फंक्शन। बट उसे जिसने बना उसे ये नहीं पता था कि आज के 2025 में उसके पास मोबाइल आएगा, मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप पे किसी लिखा तू गधा है तो ये रिएक्ट करेगा। ट्रू। इसके पीछे की मैं साइंस आपको बताता हूँ। जब हम फियर जो आता है ना, वो जो आपका एंजाइटी आता है, क्यों आता है, इसके बेसिक रीजन, इफ यू गो बैक टू स्टोन एज, जब स्टोन एज में जाते हैं ना इंसान, दे वाज लिविंग इन केव्स, गुम्फा में रहता था वो, केव्स। उसके पास दो डर था, हम्म। इफ ही हैज टू कलेक्ट फूड ही हैज टू गो टू जंगल, ट्रू। इफ ही विल गो टू जंगल देर आर डेंजरस एनिमल्स, दे मे किल इट। और उसका एक डर था, जाऊं या ना जाऊं, नहीं जाऊंगा तो भूखे मर जाऊंगा, जाऊंगा तो मुझे खा लेगा, कोई शेर आके खा लेगा। बट आज आपका कितना डर है, अरे पड़ोस का बच्चा शर्मा जी का बेटा हम्म। 95 लाया, तू 90 लेके, हम्म। अरे यार ही इज गुड इन स्टडीज, ही इज गुड इन प्लेइंग। तो दिस काइंड ऑफ फियर ना, अननेसेसरी फियर। या। पड़ोस वाला ने आपका मर्सिडीज ले लिया, आपके पास अगर मारुति है, these are the fears, these are the comparisons, unknown things that is triggering brain। तो ये जो आता है ना, हर मोमेंट आपको क्या बोलता है ब्रेन, आई मीन इमरजेंसी मोड। आपका ब्रेन का दो मोड होते हैं बेसिकली, एक है इमरजेंसी मोड हम्म। और दूसरा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। इमरजेंसी आए तो भागना पड़ता है, उसको भागना पड़ता है, उसको इमोशन चेंज हो जाता है, एंड इसके लिए आपका एमिड गला है, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रेनलिन, बहुत सारा उसका सिस्टम होता है। हम्म। अगर रेस्ट एंड डाइजेस्ट में होता है ना, कोई कुछ बोले, अरे यार आई एम फाइन। हम्म। सो आज के डेट में इश्यू क्या है, बहुत सारे लोगों के पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड जीरो, लगभग जीरो हो गया है। हर मोमेंट में आप उसका रिएक्ट होते हैं, हर मोमेंट किसी को कुछ बोलता है। तो दिस मोड आता है ना, दैट इज क्रिएटिंग ऑल काइंड डिसीज, ऑल काइंड ऑफ डिस ऑफ बॉडी। या। अगर आपका ब्रेन को, अगर आप बाय प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने आपको बोला सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से करप्ट हुआ है, उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं ना। हम्म। फॉर दैट देर आर टेक्निक्स, देर आर टेक्निक्स। ट्रस्ट में, एक इंसान के, मैं कल ही एक लेडी जिसके एक डॉटर, शी डाइड इन एन डिजीज, 12 years की बेटी। फॉर द लास्ट 5 years दैट लेडी वॉज डेली क्राइंग क्राइंग क्राइंग। मैंने उसको ओके। कल आधा घंटे का एक क्लास लिया, आधा घंटे का सेशन, उसमें मैंने एनएलपी कुछ टेक्निक किया। आधे घंटे के बाद सी सेड सर, माई चेस्ट इज नाउ 30% बेटर। उसको लगता था कि बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर था, हम्म। 30% बेटर उसका।
एक ऑफिसर, मैंने आपको जैसे बोला था, गवर्नमेंट बोर्ड से एक ऑफिसर थे जिसको पब्लिक स्पीकिंग डर था, वो दूर हो गया। इट इज पॉसिबल, इट बट इज द थिंग पॉसिबल। इज देर आर वेज एंड समटाइम्स टेक टाइम, क्योंकि अगर आपका ट्रॉमा बहुत दिन से चल रहा है, जिद्दी दाग है, एक धुलाई में नहीं जाएगा। इट टेक्स टाइम, बट तो देर इसको, इज हाँ पॉसिबिलिटी। मतलब पॉसिबल है। तो एक यस। एग्जांपल मैं देता हूँ फॉर माय ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंप्यूटर है, नया कंप्यूटर लिया आपने, फास्ट है बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सही है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर आप करोगे तो इसमें बहुत सारे यस, वायरस आएंगे, बहुत सारे वायरस फाइल्स आएंगे। आएंगे, तो यस कंप्यूटर स्लो यस, हो जाएगा। और बग्स हो बग्स सकता है कि आएंगे। अगर उसको यूज करते रहो तो कंप्यूटर डेड भी हो सकता है। अब उस कंप्यूटर को रिवाइव करने के लिए या तो आपको एक फाइल रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। यस, तो एग्जैक्टली द सेम द ह्यूमन बीइंग सेम आल्सो। थियरी ओके। एग्जैक्टली। यू कैन प्रोग्राम, वी कैन रीप्रोग्राम आवर ब्रेन। ओके। ब्रेन का जो, जैसे कि आपके बोला ना वायरस आ गया, ये तो वायरस है हाँ। ना। किसी को देख के जलन होना, किसी को देख के गुस्सा करना, तो वायरस है। उसको अगर हम जानते हैं कैसे हटाना है, जैसे आपके पास एंटीवायरस है, जैसे आप एंटीवायरस लगा दिया, देन इट कैन सर्वाइव, इट कैन गिव यू मोर प्रोटेक्टेड। Great, great. I think that brings a conclusion of our whole talk. मतलब simple हो जाता है लोगों को समझने में. Okay, so we have spoken about mental health. We have talked about meditation and mindfulness, physical health. I think we have gone deep into it. So before we conclude this, I would like to ask you if you had to give one formula for a peaceful, successful, and a fulfilling life, what would be to my audience? व्हाट आई हैव रियलाइज इन माय लाइफ, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह उठते हो ना, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। Gratitude. सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, इस दुनिया में ऑलमोस्ट 80 मिलियन स्पीसीज है, हम इंसान बने। अगर आप किसी जगह पे नौकरी करते हैं, सबको आईएएस बनना है, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। True. कोई क्लर्क भी हो तो एसएससी का एग्जाम दे के जाना पड़ता है। इट मीन्स जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट किया जाता है। 80 मिलियन स्पीसीज से अगर हम इंसान में द बेस्ट स्पीसीज, हमने कोई एग्जाम दे के ही आए हैं ना यहाँ पर। Hmm. Yeah. वी पास सम काइंड ऑफ टेस्ट, सो वी True. आर द बेस्ट। तो हम उन सारे जीवों से अच्छे हैं जिसने हमें ये बनाया। बी ग्रेटफुल फॉर हिम फर्स्ट। अब देखिए हम कैसे पीसफुल हैं। अगर आप जाएंगे अफगानिस्तान, या फिर आप जाएंगे जो वॉर चल रहा है रशिया एंड Pakistan. यूक्रेन का वॉर, आप डार्फर में चले जाएंगे, डार्फर लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अफ्रीकन रीजन सोमालिया में जाएंगे, हम कितने बेटर हैं उनसे। Absolutely. कभी हमने भगवान को बोला, अरे भगवान, वहां अगर हम पैदा होते तो नंगे घूमते, बिना खाने बिना पीने। True, true. हम यहाँ कितनी पीसफुल है। आर यू ग्रेटफुल टू गॉड? कभी आप जिस भगवान को मानते हो, जिस बिलीव को आप मानते हो, डजेंट मैटर। पहला चीज यही है। जो भी आज आपके पास, इफ यू आर ग्रेटफुल, आपका ब्रेन पीसफुल स्टेज में जाएगा। Hmm. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पीसफुल तभी तो कुछ आगे अचीवमेंट करोगे ना। True, true. Hmm. तो फर्स्ट थिंग, बी ग्रेटफुल। जो भी है आपके पास, पीने की पानी है उसके लिए, लैपटॉप पे बी ग्रेटफुल, 5G है बी ग्रेटफुल फॉर दैट, दिस ड्रेस बी ग्रेटफुल फॉर दिस, मोबाइल फोन है बी ग्रेटफुल। अरे जो हमारे पास है, एक्चुअली दिस वाज नॉट अवेलेबल टू श्री राम, श्री कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, बुद्धदेव, उनके पास ये सब नहीं था। नहीं था। Hmm. हाउ ग्रेटफुल यार, हम कितने लकी हैं, हम सबके पास ये सब चीजें हैं। Hmm. आप कहाँ, मैं कहाँ, जोग्राफिकल रीजन, डिस्टेंस का कोई मतलब जीरो हो गया, Yeah. विजिबल डिस्टेंस। So first thing, be grateful for what you have in your life. Very simple. And words से नहीं, इमोशन से बोलना Emotions. पड़ेगा। ऐड इमोशन, क्योंकि सारा गेम इमोशन का है। मैं Yeah. आपको बोलूंगा, सपोज एक बॉय एंड गर्ल है, बोलो आई लव यू, बोले अरे आई लव यू यार, Hmm. किस पे कनेक्ट होगा? Yeah, सो absolutely. दिस इज इमोशन इज द लैंग्वेज दैट इज ट्रांसमिटेड टू यूनिवर्स। भगवान के पास जाता है इमोशन नहीं जाता, वर्ड्स नहीं जाता ज्यादा। तो अगर आप ग्रेटफुल हो विथ इमोशन, दैट्स द फर्स्ट फंडामेंटल। आप किसी धर्म में जाएं, किसी रिलीजन, कहीं पे भी चली जाइए, यही चीज हमेशा आपको करना पड़ेगा आपको। And yeah, anything else would like to say? Last word to my audience. लास्ट Other वर्ड, than being grateful. Yeah, of course, being grateful is this thing. आपको बोला ना मैं, तो व्हाट यू, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, Mm-hmm. एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट It's an रिएक्शन। opposite direction. Yeah. आई वाज रीडिंग अ बुक, आई थिंक द बुक इज विथ मी और नॉट एट प्रेजेंट। This was a very nice book I had read about Okay. a person who was in Germany. Mm-hmm. He was a person in Germany who was kept by the Nazi people. At that time, he was given torture in such a way, physical torture, very heavy torture, unbelievable torture. Mm-hmm.
And at that moment also, he said one thing. I always give this message to people. He said, the government, the society, people can take everything from you, even your dress, your qualification, your job, your money, everything can be taken from you. Hmm. Even the Nazi people saved their whole body. एक भी बाल नहीं छोड़ा उनके बॉडी पे, Hmm. नंगा छोड़ा -8 डिग्री टेम्परेचर में. Even then, he said one thing. It's a choice. In dreadest part of your life, you have a choice which people cannot take it from you. वो क्या आप उस वक्त क्या सोचते हैं? Hmm. What you will respond at that moment, that cannot be taken by anyone from you. जिंदगी में आपका चैलेंज आएगा. Why? Jesus Christ, he was crucified. Sri Yeah. Ram, he went to Banbas. Sri Krishna, he was killed by his own uncle. Hmm. Now think, these are symbols. Any religion you go, challenges will come. How you But take? at that moment when challenge comes, How what do you? should be my choice? Should I be angry on you? Or should I say, okay, he has done his duty, now let me do my duty. Even if he done any wrong thing to me, still I pray God to give him good bills, good thought, good ideas. This is what one thing I would like to tell to anyone. Life is never a road, it's not a highway. It's a गांव का रोड है, इंडिया का particular गांव का रोड है. At that moment, you have to choose. Should you be angry? Should you be frustrated? Should you feel stressed? Should you feel anxious? Or you should say, chalo theek hai, it's they have done their duty. What can I do? What can I believe? What can I do respond? Great, great. I think, friends, that brings us to an end. Thank you so much once again for being me on my podcast. And friends, so two important points what we are taking home apart from Joe, we have heard about mindfulness, about the gut mind connection, so on and so forth, emotions and all those things. Two important things take home points are, one is be grateful to whatever you have instead of being unhappy about what you are not having. Think about what you have and be grateful to God for what you have. And also, the second most important thing is how do you respond to a reaction, to an event, is what is important, which is there within you. I think that sums up. Gratefulness. Yeah, great. Being Yeah, grateful to everything what you have everything, sums up the everything whole you have. thing. Rest, Yes, everything will yes, fall in place. absolutely. Great. Great, Mr. Damodar. It was great talking to you. And I think this is one of the best insightful discussions we had on our podcast about mind, gut, mindfulness, and meditation, and all those things. So, once again, thank you so much for being on my show. So, friends, with that, I come to an end this particular very interesting and insightful episode. Thank you so much, Mr. Damodar Hota. Thank you for being there on my podcast. Thank you, Srinivas sir. I'm really grateful to you. I'm really grateful to all the audience, and I'm really grateful to Universe for giving me this opportunity. Thank you, Thank you. thank you. I'm grateful to Thank you. you. All the best.